Hi everyone, good evening. Welcome to Mrs. Diva. Welcome to the Facebook page of Mrs. Diva and YouTube channel of Mrs. Diva. Of course, to Facebook group of Mrs. Diva as well. My name is Astha Jain. I'm a business coach and a consultant for women entrepreneurs. And today I have with me very beautiful, everybody's favorite Malti Vaswani, founder of Number Future. So, how are you all doing? And as soon as you guys join us, please drop a hello and a hi. And before we move forward, I'm going to give Malti some time to say hello to all of you. Hello, all. Good evening. A very warm welcome. And I know this is going to be a very exciting session. It's going to be a learning session because it's going to be by none other than our mentor, our guru. So this is, वो कहते हैं ना कि जल्दी जल्दी keep up the pearls, take up the pearls of wisdom that they come from here. Anything and everything from Asta is truly going to, enhance our business. That's one thing for sure. कोई भी हो बस अपने pens and books are we always have them ready and I too have them. So it is a pleasure to have being coached by Asta, and thank you so much for giving me this opportunity, Asta ji, so that I could learn little more and move ahead in my work kind of a thing. Thank you so much. Thank you so much. And we are seeing a lot of comments, Malti ji. Smriti has joined us. Pooja. Hi, Pooja. Hi, Smriti. Hi, Kavita. And we have Charu. Hi, Charu. Hi, Munaz. Hi Isha, Hello hi Anna everyone. ji. So खूब सारे लोग आ रहे हैं. Rakhi, hi Rakhi, thank you guys. Okay, so before we move ahead, let me hi Samita, thank you. Let me also tell you guys that this session is actually because this is a gift from Mrs. Diva to Malti ji, and you all know the reason why, because she is actually, of course, most deserving candidate also, but this was a small contest that we ran for our registered members, and she was the winner, the most favored member. Everybody wrote in that they have they have redeemed services from Malti ji. So the most famous registered members in Mrs. Diva. So this was a gift, small token of love, small token of appreciation from Mrs. Diva to Malti ji. And okay, so guys, keep dropping in a hello and a hi as soon as you guys join the session. And yes, Megha is saying that she is the most favored and lovable. So Malti ji, आप बाद में comments पढ़ोगे, so you will see Thank you that so everybody much, is everyone. writing it. Honestly, Asta, it's such a when we had all joined, and it was we never thought that 1 year down the line it would be kind of a it is not kind, it is a family itself. When anybody, the first thing that comes to our mind registers is any problem, anything in life, any solutions we want is the go factor is to you or to the group. So it's that one stop solution होता है ना कि एक शॉप के नीचे सारे solutions मिलते हैं. That is what Mrs. Diva is for each and everyone. It's not just for me. कोई भी चीज बोल दो मतलब A to Z आपको सब यहाँ पर मिल जाएंगी करके. So that is, in fact, it's our pleasure that we could get associated with you and with the group. So that Thank you is, so to me, much. I mean, it's been a wonderful journey. थैंक यू सो मच. ग्रुप इज बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ यू. एक अकेला बंदा तो ग्रुप बना ही नहीं सकता ना. इट इज ऑल बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ यू. सो थैंक यू सो मच. True, थैंक but सबको यू. साथ लेके चलना भी सबको नहीं आता. You have that thing in you. You lead the tribe. So सब कुछ सब लोग तो साथ दे देते हैं, but सबको साथ लेना लेके चलना is what we all strive to learn from you. थैंक यू. ऑल राइट गाइज, सो फटाफट से सेशन स्टार्ट करते हैं. एंड ऑनेस्टली गाइज, मालती जी ने मुझसे 3 क्वेश्चंस पूछे, एंड दोज 3 क्वेश्चंस दे आर extremely valid, and I can tell you guys that is why I mentioned those questions in the creative bit, because those are the most valid questions, and I believe these are the questions that everybody would want to know. सिर्फ इनके ही क्वेश्चंस नहीं है. ऐसा नहीं है कि सिर्फ सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए ही वैलिड है वो क्वेश्चंस, या प्रोडक्ट प्रोवाइडर्स, प्रोडक्ट वाले
लोगों के लिए ही है, but these are the questions that everybody I think today wanted to know some चाहे वो कोई भी हो. That is why I thought कि चलो creative में ही डाल देते हैं कि ये questions मालती जी ने पूछे हैं, put up किए हैं, and I don't know, शायद ये इन्हीं की quality हो सकती है कि ये question में भी सभी का सोचती हैं. So before we start with the questions, guys, let me just tell all of you and mention once again that that the maximum tagger and the most active viewer today again is going to get a little surprise from Mrs. Deva. So keep sharing, stay active on the thread, keep tagging your friends, or if you cannot share, कई बार लोग ban हो जाते हैं टैग कर वो शेयर करने से. सो आप एक्टिव भी रहोगे टैग इस पे थ्रेड पे तो भी चलेगा, सो हम उसको भी कंसिडर कर लेंगे. सो डोंट वरी अबाउट दैट आल्सो. सो कीप टैगिंग योर फ्रेंड्स. सो guys, let's start this very very important session for all women entrepreneurs, and not just to because Mrs. Diva में हम लोग अपने बेनिफिट से पहले हम लोग ये कम्युनिटी के बारे में सोचते हैं. सो इसलिए भी अपने फ्रेंड्स को, एंटरप्रेन्योर्स को, अपनी जो बाकी विमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको जरूर टैग करना, और प्लीज जस्ट कीप शेयरिंग दिस सेशन बिकॉज मालती जी हैज आस्क्ड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. तीनों ही क्वेश्चन आप सभी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं और आपके सभी एंटरप्रेन्योर फ्रेंड्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है. सो मालती जी, रेडी? स्टार्ट करें? एब्सोल्युटली. हाँ जी, Guys, if you all are also ready, just give us a thumbs up. हम दोनों को बता दो आप सब ready हो. मालती जी और मुझे बता दो that you guys are ready. Give us a thumbs up in the comment section so that we can start off with the questions. Yes, Raki, आज भी gift है. So guys, give us a thumbs up so that we can start with the questions. हम मालती जी से बोलेंगे, first question वो पूछ लेंगी अपना. Give us a thumbs up so that we know. Okay, so we have got the thumbs ups. मालती जी start करते हैं. Okay. See, first thing is, as says of late, we all are going through a very, stressful time. So, कई बार हम लोग को, many of us have involuntarily taken a break, so that when, because of the health issues and things like that. So, how, now the question is, when you're moving ahead, it's okay. But आपके पास जब 15 दिन या 20 दिन और 1 month का ब्रेक लग जाता है, and when you try to get back, तो वो get back to get it to that level at where you had left becomes difficult. And कई बार वो छोटे छोटे steps also are difficult to take. So how do we go about making a comeback after the break that we've taken? वंडरफुल क्वेश्चन मालती जी, एंड इसीलिए मैं कह रही थी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये. लॉट ऑफ पीपल हैव, कुछ तो ऐसे हैं जिन्होंने खुद ही बीमार हुए, जो कि लोग, या कुछ ऐसे हैं कि फैमिली में बहुत सारे लोग बीमार हुए, एंड लॉट ऑफ पीपल हैव सीन दैट ब्रेक इन देयर बिजनेस. इनफैक्ट आपने खुद ने ये बहुत बड़ा ब्रेक देखा, इतना स्ट्रगल आपने किया. एवरीबडी नोज कि कितना लंबा आपके साथ ब्रेक हुआ बिकॉज द सर्कमस्टांसेस वर लाइक दैट, एंड नाउ दैट यू आर ट्राइंग टू मेक अ comeback, और ऐसे ही a lot of our other entrepreneurs are trying to make a comeback. So उनके लिए भी मैं ये चीज I'm trying to share with them that how do you make an effective comeback. So उसके लिए what do? We follow certain steps. So सबसे पहले तो what do you guys have to do? क्या करना है आपको? What do you do? How do you begin? The first thing that you do is that you sit and when we make a comeback, हम एक तो बहुत mentally stressed होते हैं. Guys, मालती जी का जो second part था question का वो यही है, how do we deal with the mental stress. So मैं उसका भी answer साथ साथ कर रही हूँ. That it is completely understandable that you will be mentally stressed. ये बिल्कुल होगा, आप सबके साथ होगा. That you will you will be stressed at a certain point because you will at the back of your mind you will know that I had worked so hard before this break, और कहीं ना कहीं ये लगेगा कि मैं शायद ये सारा काम जो है ना वो खत्म सा होता जा रहा है, आंखों के सामने लगता है, आंखों के सामने दिखता है कि यार इतनी मेहनत की थी, इतना एक क्लाइंटेल बना लिया था, इतने ऑर्डर्स जा रहे थे या इतने बुकिंग्स आ रही थी, और ऐसा लगेगा कि ये शायद खत्म होता जा रहा है. बट अगेन रिमाइंड योरसेल्फ दैट नथिंग इज above my life or my family's life, and then you sit and then you tell yourself that when I've done it once, I can do it again. You have to really tell this thing to yourself, and then you start with a self-assessment. So एक बैठो अपने planner को लेके बैठो and then start off with a self-assessment and see
वेयर आर वी एट, वो एक एक अकाउंट हम लोग लेते हैं, एंड चाहे वो इन्वेंट्री का हो, जस्ट सी वेयर डिड यू लीव, बिकॉज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने इमरजेंसी में काम छोड़ा, इंक्लूडिंग यू मालती जी, बिकॉज सर्कमस्टांसेस ऐसे हो गए थे उस टाइम पे, आप बिल्कुल सोच नहीं सकते थे, एंड दिस वुड हैव हैपेंड विद अ लॉट ऑफ पीपल, राइट? सो Yes. जस्ट सिट बैक एंड जस्ट सी वेयर डिड यू गाइज लीव, क्या कुछ ऐसे ऑर्डर्स थे जो कि वी लेफ्ट रियली इन द मिडल, कुछ हमने बीच में बिल्कुल छोड़ दिया था, कुछ ऐसा था जो कि अभी हमारे को दैट नीड्स आवर इमीडिएट अटेंशन, क्या इन्वेंट्री है हमारे पास, हमें कितना हम कहाँ पे हम खड़े हैं, बेसिकली व्हाट इज पेंडिंग एंड वेयर आर वी एट, करंट सिचुएशन हमारी क्या है। सो हमें करंट सिचुएशन का एक अकाउंट लेना है। व्हेन यू विल नो वेयर एम आई एट करंटली, दिस इज गोइंग टू गिव यू काइंड ऑफ अ मेंटल सेटिस्फैक्शन, एक दिमाग पे से, हमारे ब्रेन पे से, जिसपे हम इतना बोझा डालते हैं, एक उस पे से आपको यू विल फील कि अच्छा ठीक है, मुझे अब करंट सिचुएशन पता है, एक अपने आप को ही तसल्ली मिलेगी कि ठीक है, आई नो मैं कहाँ पे खड़ी हूँ या मैं कहाँ पे खड़ा हूँ। फॉर आवर मेल काउंटर पार्ट्स ऑल्सो, उनको भी मेरा यही सजेशन रहेगा, that you will know where am I at currently, and now I will move ahead from here. Yeah, this should be your first step, this should be everybody's first step to take an account of the current situation. पहला step ये होगा। Now after this, you have to start making a plan for yourself. Now you start making a plan for yourself, and your major focus should be on marketing, because अभी क्या है, when we have left, and चाहे वो किसी को 1 महीना हो गया, किसी को 15 दिन हो गए, किसी को prolonged illness भी रही किसी किसी की फैमिली में, so they might have spent like 2 months away from the business, किसी ने 2.5 महीना, किसी ने 3 महीना, किसी ने whatever time you have spent. So trying to focus a little bit on your marketing side, and try to see how can we gain back that visibility that we have lost. And one of the things, initial things that you can do is just dropping a WhatsApp message to your broadcast list. So most of us, we have broadcast lists on our WhatsApp. So just drop a hello or a hi or reintroduction, or that we are back after this long break ka WhatsApp or to our broadcast list. My suggestion would be, hi Vanna, thank you for joining in. My suggestion would be that do not avoid saying stuff, or avoid sending out buying या selling वाला जो एक direct message होता है ना, that you can buy this stuff from us, you can buy that stuff from us, वो वाला जो message है उसको avoid करके just say that we know we have been away for a pretty long time, but let me just tell you that Number Future is now back, and we have started our consultations. Soon we will be connecting with you, and soon we will be sharing a lot of information with you. एक introductory सा message उनको, informational सा message that now we are back in business, and this goes for product वाले जो businesses हैं उनके लिए भी. Then we will plan our content. Spend some time and plan your content and lean towards informational content. So I'm trying to tell all of you that we do not straight away become salesy. हम सीधा salesy नहीं बन रहे हैं. जैसे ही हम वापस आए हैं, we are not becoming salesy at all. हम सीधा नहीं कह रहे ये सामान ले लो, ये प्रोडक्ट ले लो, मेरा ये स्टॉक बचा हुआ है, आप मेरे से बाय कर लो. हम लाइव सेल्स नहीं लगा रहे हैं, हम ऑफर्स और डिस्काउंट्स पे नहीं पहुंच रहे हैं. What we are trying to do is we are trying to gain their attention by informational marketing. So जो strategy है वो हम कहते हैं उसको reconnecting with the audience via re-engagement. So हम reconnect कर रहे हैं और re-engage कर रहे हैं उनके साथ. इनफैक्ट मालती जी, आपके साथ एक बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है, that the niche, the industry that you are into, you can connect with people very very fast. Plus people already love you, so आपका USP है that you connect with people and you have that connect. एक वो इमोशनल कनेक्ट आप बहुत जल्दी बना लेते हो. इंफॉर्मेशन आप ऐसी देते हो that it वो एक कहते हैं ना, वो सीधा इंसान दिल से कनेक्ट हो जाता है आपके साथ. सो ऐसा कंटेंट आप बना सकते हो जिससे कि लोग ऑटोमेटिकली आपके साथ कनेक्ट हो जाते हैं. सो उस पे फोकस करना है आपको. सिमिलरली कोई और भी जो आपके जैसे इंडस्ट्री में है, उनके साथ भी अगर आप ब्रेक से वापस आ रहे हो, इंफॉर्मेशनल कंटेंट पे फोकस करो, अपने आप विजिबिलिटी ग्रेजुअली मिलती जाएगी. ऐसे लाइव सेशंस यू कैन प्लान. इनफैक्ट मैंने आपका शायद आई थिंक
आपका मैंने वो देखा भी था स्टेटस, आपने आई थिंक मर्करी रेट्रोगेट करके आपने कुछ टिप्स वगैरह शायद जी शेयर जी। भी किए थे. हाँ जी। These are the यस। kind of things that can work really well in your favor. Start doing live sessions. Gradually, धीरे धीरे आप live sessions start करो. Start making posts, informational posts, questions पूछो. So basically हमें ऐसे questions पे, ऐसे posts पे focus करना है wherein you can stay engaged with your audience. So ऐसे questions पूछो wherein they can ask you questions, you can answer them, and you stay engaged with them. So this goes on for the product people also and for services people also. So health wale logo ke liye, in fact for fashion people also, for aapki industry mein to sabhi ke liye this is very very important. So you have to stay engaged with the audience, try to ask questions, try to gauge what are kaha wo kya abhi latest wo kya soch rahe hain, so that you come back into that mode of conversation with them. वो to and fro होना बहुत जरूरी है. गेट एक्टिव इन योर कोर ग्रुप. सो जो हम हमेशा बात करते आए हैं कि एक सेट ऑफ कोर ग्रुप्स हम जरूर उसमें एक्टिव रहते हैं, दोज 3-4 ग्रुप्स जो हमारे कोर ग्रुप्स हम उनको कहते हैं. गेट एक्टिव इन दोज कोर ग्रुप्स एंड डोंट फॉरगेट योर ओन पेज. अपने पेज को बिल्कुल नहीं भूलना है. लॉट ऑफ टाइम्स वी लाइक हम अपने ही पेजेस को, अपने पेज को हम we sideline it. So do not do that. अपने पेज पे भी एक्टिव रहिए. And interaction is important. Maybe send in batches of messages to your client. You want to ask them something, कुछ survey question छोटा सा भेज दिया, or you could maybe any question that you would want to ask them. And gradually, when some time has passed in, then you can come into that mode of selling them your products or services. तब आप चाह के आप when you are into that now I'm back into my comfort zone, then start introducing your products and services back to them. तब आप धीरे धीरे, if you want, you can introduce some offers. So a lot of times people think that I have certain stock that I want to move. So आप चाहो तो आप उस पे offer निकाल सकते हो. If you want, you can put up live sales. If you want, so it's not necessary कि offer हमें देनी ही देनी है. If you want, आप offer निकालो. If you don't want, आप offer नहीं निकालो. If you want, in your case, you can club your products and your services. So आप तो ये भी कर सकते हो कि आप अपनी सर्विस और अपनी जो प्रोडक्ट है आप उसको क्लब कर सकते हो. So these are the things that you can do in your case. And of course, basically what I'm trying to tell everybody here is that content plays a very very good a big role in coming back, because we lean towards informational marketing when we want to connect back with our target audience, when we want to come back into the game. So this is something that you can usually use. You can, and a lot of other businesses also can use business recovery steps जिनको हम कहते हैं, that these are the business recovery steps that a lot of people can use. But definitely जो exact steps है, anybody who wants they can discuss with me personally. मेरे से आप discuss कर सकते हो जिसको भी जरूरत हो. Anybody who wants to come recover, come back into that game. I'm just trying to read the comments if anybody had asked any questions. So yes, Mubina, it is very important to create that repo that we had with our client. Yeah, okay, great. Perfect. Right. Yes, Mataji. Yes, sorry. Yeah, it's Little okay. network issue. Yeah. No worries. Anji. Next question Right. पे move करें.
Also, because of these situations, and at times when we are product based, so the raw materials or the products are not available from the vendors. I So what happens in that case? Either the vendor refuses us or gives us at a little higher price. So जी because जी of that, we have to increase our price range also. सो हम्म, बिकॉज वो सारी चीजें देख के एंड द ओवरऑल हमारे पास जो आता है वो ज्यादा वो हो जाता है. So how do we say going this to the कस्टमर कि अभी एक प्राइस हाइक हुआ है. यस डेफिनेटली वी से कि कि एक हम्म, रीजन तो दे दे कि वेंडर ने. बट व्हाट हैपेंस इज दे से कि अच्छा अभी अगर एक बार हम कम पुरानी रेट्स में दे दें, so they keep on taking that, whereas the vendor doesn't reduce the price true. when the situation normalizes. So how do we put it across so that it's taken more, the customers are more accepting towards the change in the prices. Absolutely, absolutely. And in fact, this is one of the things that I really have to deal with when I'm coaching people these days. सबके साथ ये issue आ रहा है. A lot of people are facing this problem that vendors have increased the prices, and because this is because a lot of people are not even getting the raw material. So those who are Yes. getting the raw material, the prices are high, though, and a lot of people are not even getting the raw materials. So now the question is, what do we do? Because we really have to we really have to break this news to our clients. And this is something that we have to do. So the you know again I'm going to say that the being transparent and being extremely communicative, these are our two best friends. ये तो यहाँ पे ना दो best friends बना लो अपने. पहले तो एक तो being very very transparent and being communicative. So हमें अपने clients से we have to share the complete picture, and I'm going to give the steps after this. These are the two premises that we have to work on. We have to talk to them. We have to be very very clear. We have to be very very transparent. We have to share with them that this is the complete situation. We are working with this. Yes, Smriti, so this is applicable. I can understand that this is applicable to all businesses, industry wide I'm talking about, not just Maltiji's business. I'm talking about industry wide. So sabhi ke liye these are I'm talking about the most common steps. So we have to be extremely transparent and communicative, and share the complete picture with the client. Now, first step, what can we do? The first step is that we explain the reason and the benefit attached to it. So what do we do? At times हम दोनों में से ना एक चीज भूल जाते हैं. या तो हम रीजन एक्सप्लेन नहीं करते, या हम कंप्लीट बेनिफिट एक्सप्लेन नहीं करते. Now, the reason means that we explain to the client that this is the reason we are unable to give you the same pricing. So for example, Malti ji, in your case, probably आपके vendor ने क्या किया कि आप जिनसे भी आप stone ले रहे थे, या आप जिनसे भी अपना कैंडल का आप स्टफ ले रहे थे, आप उसने क्या किया कि 20% हाइक कर दिया, 40% हाइक कर दिया. सो यू एक्सप्लेन टू योर क्लाइंट दैट see, this has happened, and this has happened due to this reason, and now I have to increase the pricing because of this reason. This is the first point. Second point is you explain the benefit also. You tell them that I have added this content, or I have added this service, or I've added this support. Now this could be something new or something old also that you have not really communicated to the client before. A lot of times we provide something to the client, but we have not really communicated it to the client earlier. So now what we have to do is we really have to make a proper list. We make a creative, we make a list. And in your case, we have to explain it to the client. जैसे हम आपके केस में explain कर सकते हैं that boss, हम आपको जो दे रहे हैं, it includes the consultation also. Because आप अभी जब फॉर एग्जाम्पल आप कुछ कंसल्ट आप उनको कुछ एक्सप्लेन कर रहे हो कि भाई आपके केस में ये ये स्टोन जाएगा या ये चीज जाएगी, इफ यू आर नॉट सेलिंग इट, देन वो एक कंसल्टेशन जो है इट कम्स एट अ चार्ज. बट अभी अब आप उनको ये एक्सप्लेन करोगे कि बॉस ये 500 रुपीज का कंसल्टेशन है, इट इज इंक्लूडेड इन इट, ये मैं आपको साथ में दे रही हूँ.
So we have to really be open with them that this is a benefit that is coming to them, which is, in this package itself. So this is something that we have not been doing as of now. हम अभी तक उनको ये explain नहीं कर रहे थे, and this could be any of the benefit. So the other day when I was speaking to Shruti, so ऐसा ही उनके साथ भी ऐसा हो रहा था. There were a lot of benefits that she was offering, but she was not communicating. So ऐसे benefits के बारे में सोचो, ये ऐसा इवैल्यूएशन देखो कि क्या ऐसे बेनिफिट्स है जो कि हम लोग ऑफर कर रहे हैं बट हमने अभी तक कम्युनिकेट नहीं किए हैं. मेक अ कंप्लीट लिस्ट, एक जगह उसको लिस्ट डाउन करो, एंड देन टेल इट टू द क्लाइंट वेरी वेरी कैंडिडली, स्पेसिफिकली उसको समझाओ दैट दीज आर द थिंग्स दैट यू आर गेटिंग. Then keep sharing about, what are your strengths, why should the client choose you. USP, आपका USP क्या है, हम भूल जाते हैं उस पे एम्फसाइज करना कि यार ये मेरा USP है, this is what I am known for, this is why you should choose me, and this is this is the reason why my client should, why you should choose me. इस पे फोकस करना बहुत जरूरी है. Flexi payment plan, give them flexi payment plan, that give them options. So a lot of times when we give someone an option and they choose an option, they are comfortable with it. So it happens with everybody. हम उनको ऑफर्स आप निकाल सकते हो, एंड दैट ऑफर्स का मतलब ज्यादातर हमेशा हम ना ये सोचते हैं दैट ऑफर्स आर एसोसिएटेड विद डिस्काउंट्स. डिस्काउंट भले ही आप मत दो, गिव देम ऑप्शंस इन टर्म्स ऑफ पेमेंट प्लान्स. ड्यूरेशन आप इंक्रीज कर सकते हो, आप उनको कह सकते हो दैट इफ यू ऑप्ट फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन, सो मे बी आपको जो है वो जितना आप पहले पे कर रहे थे आपको उतना ही पड़ जाएगा. सो दैट इज गुड फॉर यू ऑल्सो एंड फॉर द क्लाइंट ऑल्सो. सो मैथमेटिक्स, सो थोड़ा सा मैथमेटिक्स पे आप you guys can play. Then give them subscription based offers, या आप अपनी services, you can add your own services for the client. So think of what all benefits you can add to them. So basically we need to we need to show them the benefit. So हम जब उनको whenever we feel that client is coming on the back foot, जब client back foot पे आता है, we start talking about the benefits and the value that we have added to the product or to the whole proposition. उसको value proposition हम समझाना start करते हैं. Then discount, of course I will say that offer discounts only if you are comfortable. So I will not say that keep on offering discounts if you are not comfortable. We go to the positive reinforcements. So positive reinforcements का क्या मतलब है, that we share more reviews about our work. This will shift the focus from money to the positives of your work. So a lot of times we just keep, and this I'm talking about social media also. So social media पे भी कई बार ये होता है that we just keep we stop ourselves from sharing the reviews. हम reviews share करना बंद कर देते हैं. So don't do that. Start sharing more and more reviews, and especially a person like you, आपको तो बहुत सारे reviews आते ही होंगे. So make your review albums, और client के साथ भी review album जरूर अपना share करो, even if you feel that this is someone who has taken a service from you already. If you feel जरा भी ये problem आने वाली है, if you are anticipating this issue, आप उसको जरूर अपना रिव्यू जो है जरूर शेयर करो. जस्ट try to say this way that I would like to share this new review I have gotten for my service. So try to do it this way. Then I would say that if it is feasible for you, announce that there is going to be a price hike in my services and give them this option of booking in advance at the current price. So Mrs. Viva is an example for this. I knew that I had to increase the price of the group membership because it had already been almost a year that I increased the group membership pricing. And I announced it, and I gave an option to the members that if you want, you can book at the current pricing. So if it is feasible for you, you can also do that. Announce it in advance. If you want, you can set some terms and conditions to it. आप चाहो तो कुछ terms या conditions लगा सकते हो. But this can also help you in building trust with the members. So the members would feel that you are being transparent with them. आपने प्राइस हाइक करना था अपनी सर्विसेज का. सो प्रोडक्ट्स में आप लोग ये नहीं कर पाओगे, बिकॉज प्रोडक्ट्स में इफ यू आर नॉट गेटिंग रॉ मटेरियल, पिछले रेट का अगर रॉ मटेरियल नहीं है आपके पास तो आप ये नहीं कर सकते. बट सर्विसेज में इट इज अ लिटिल बिट पॉसिबल फॉर योर पीपल हु आर इन सर्विसेज. If you want to hike the prices of your services, try
कर सकते हो आप कि आप एक छोटा सा उनको पहले एक इंटीमेशन दे दो, बुक इन एडवांस एंड गिव देम सेट टाइम एंड लिमिट कि आप इतने टाइम में आपको रिडीम करना है. इट इज गुड फॉर यू ऑल्सो, आपके पास भी एक लमसम अमाउंट ऑफ मनी आ जाता है एंड दे ऑल्सो गेट दिस ऑप्शन कि उनको पिछले वाले प्राइसिंग पे दे कैन बुक योर सर्विसेज. And of course it is important. So guys, I think Malti ji has some Yeah. network issues. Oh, she's there. Okay. So then I would say that keep everyone on the same page. A lot of times what we do is that सेल नहीं हो रही होती ना, so हम बहुत desperation वाले मोड में आ जाते हैं, किसी को पिछले प्राइसिंग पे दे दिया, किसी को न्यू प्राइसिंग पे दे दिया. बट लेट मी टेल यू, पीपल टॉक टू ईच अदर, लोग एक दूसरे से बातें करते हैं एंड देन दे दे टेल ईच अदर कि हाँ इसने मुझे तो इस पे दे दिया, मुझे तो इस पे दे दिया, and then it creates confusion. So try to keep everybody on the same page and don't give in this give in to this pressure. अगर एक बार आपने प्राइस हाइक कर दिया तो वो सबके लिए करो, अदरवाइज इट इट डजंट, आई थिंक, मेरे को ये लगता है कि वो एथिकल और वो एथिक इशू मेरे को लगता है वो मॉरल इशू हो जाता है. सो बिकॉज वो जिन्होंने हायर प्राइस पे लिया तो गलत, मुझे पर्सनली वो मुझे चीज बिल्कुल, ठीक नहीं लगती. absolutely, yes. सो डोंट गिव इन टू दैट. And last point I would say is that be confident about it. आप भी इंक्रीज कर रहे हो तो किसी वजह से करो ना, बेवजह तो कोई भी प्राइसिंग हाइक नहीं करेगा अपने, चाहे प्रोडक्ट हो चाहे सर्विसेज हो. ये स्मृति इज एब्सोल्युटली राइट, इट क्रिएट्स मिसट्रस्ट अमंग द कस्टमर्स. सो अगर हम किसी को कुछ और प्राइसिंग देंगे, किसी और को कुछ और प्राइसिंग देंगे, सो बहुत मिसट्रस्ट सा हो जाता है, विच इज नॉट राइट. And the last thing is that be confident. See, everybody does it for a reason. किसी को nobody wants to do it out of just you don't get up one day and feel I am, मुझे तो customers lose करने का शौक चढ़ रहा है आज, चलो मैं प्राइस बढ़ा देती हूँ. So कोई भी ऐसे नहीं करना चाहता, रीजन से ही करते हैं. And I think don't apologize a lot and don't give a lot of explanations. You have to be firm, you have to give them a reasoning, but एक लिमिट में देना है. वो ऐसा नहीं है कि we just keep doing it and we just keep apologizing. आपका बिजनेस है, आपको पता है आपके रीजंस क्या हैं, and you just stay firm and reasonable explanation देके we just stop it here. And then it is, the ball is in their court. they decide लेना है तो वो लेंगे, genuine client होगा तो वो समझेगा भी, because प्राइसिंग वो जो इन्फ्लेमेशन वो इन्फ्लेट हो रहे हैं वो हर चीज में ही हो रहे हैं ना, ऐसा तो है नहीं सिर्फ हमारे ही सामान में हो रहे हैं. पेट्रोल की भी बढ़ रही है प्राइसिंग, डीजल की भी बढ़ रही है, खाने के सामान की भी बढ़ रही है, तो इतना तो समझना चाहिए सबको. Right. So, right. Right. So, okay. So, Shikha has a wonderful idea. She's saying that every month she keeps, every month शायद वो एक वीक सेल पे रखती हैं where her products and services are at discount, and this helps the customers who cannot maybe afford it. So this is also a great idea. If you guys can do it, if you guys can afford it, then this is amazing. Okay, so this is wonderful. So but just remember guys, this also might send a message to people that do not buy your products and services on full prices. So be very very careful if you want to do it. तो ऐसा ना हो कि लोग सिर्फ वो एक हफ्ते का ही वेट करने लगेंगे आपके प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज बाय करने के लिए. सो डोंट डू इट लाइक एवरी मंथ, हर मंथ नहीं करना. ये थोड़ा सा सोच समझ के स्ट्रेटेजाइज करके करना. ये आइडिया बहुत अच्छा है, लेकिन इसको फॉलो जब आप करो तो थोड़ा सोच समझ के, और हर प्रोडक्ट पे नहीं होना चाहिए ये. Right. Because then it becomes, they get used to and they start waiting for that time to कि sale तो आने वाला and we will buy it up at that time. This happens. वो फुल प्राइसिंग पे लेंगे नहीं कभी. हाँ बिल्कुल ही. Right. All right. So last question की तरफ मूव करते हैं मालती जी. जी बिल्कुल. See, what happens is, many times we come out with lot of ideas, or we introduce something new in the group, or anyway some concept or something, anything new to our existing services, and that has a tendency that gets duplicated, or not really duplicated, but it gets copied, or people take ideas from it.
we are okay with taking ideas, but as long as somewhere see, we know back of the All mind right. this is where it has originated, and some people are very good at marketing and some are not. So what happens कि एक कई बार आगे निकल जाता है because maybe the marketing skills are much more competent than the one who's getting through with True, the true. ideas. So how do we deal with this kind of a situation? True, true, true. So this is the same exact conversation I had with Shreya. I think yesterday, Shreya, we had this conversation, or day before yesterday, I had this conversation. So सबसे पहले तो Malti ji, this is something I really understand, and I really understand that it is. I agree that it is upsetting also, and especially if it is someone known to us, तो वो और ज़्यादा थोड़ा हम upset भी हो जाते हैं. And honestly there is no way that we can stop, तो हम इसको नहीं कर सकते, नहीं रोक सकते, ये पॉसिबल नहीं Absolutely. होता है ना. सो बट यस कुछ कुछ स्टेप्स हैं जो कि हम लोग वी कैन फॉलो एंड वी कैन डील विद इट. सबसे पहले तो you know honestly it is more about the more about the execution. So execution of the idea मैं ये भी बोलूंगी. I agree with you कि marketing कई बार जो मार्केटिंग बहुत अच्छे से कर लेता है वो थोड़ा आगे निकल जाता है. ये भी मैं इस चीज से भी मैं अग्री करूंगी कहीं ना कहीं कि वो मार्केटिंग वाला जो मार्केटिंग बहुत अच्छे से कर लेगा, बहुत अच्छे से प्रेजेंट कर लेगा चीजों को, वो आगे बढ़ जाता है. बट इस टाइम में हमें क्या करना चाहिए दैट जो नॉलेज आपने गेन किया है, बिकॉज यू वर द ओरिजिनल पर्सन टू कम अप विद दैट आइडिया. सो वो जो नॉलेज आपने गेन किया है, यूज दैट नॉलेज. सो यूज दैट नॉलेज एंड यूज, बिकॉज वो प्रोसेस था, वो एक प्रोसेस था फॉर दैट अदर पर्सन. उसके लिए तो फाइनल स्टेप था, बट आपके लिए वो एक कंप्लीट प्रोसेस था. नाउ यू यूज दैट कंप्लीट प्रोसेस अगेन. आप एक प्रोडक्ट इनोवेट कर सकते हो, आप कुछ भी इनोवेट कर सकते हो. सो यूज दैट थिंग एंड you can generate more ideas. Of course this is one of the things that you can do. And always of course stay true to your clients. Then share the benefits. Again, share the benefits of what you are what you have done, what you are of what you have made. उसके benefits ज़्यादा अच्छे से आप बता पाओगे because you have lived the complete process. वो जो process है वो आपने ही follow किया है. And to bring back the focus on you because you want the focus कि आपके पास वो focus वापस आए. So you share the whole story. आप जो पूरा स्टोरी है उसके पीछे का, हाउ डिड यू गेट दैट आइडिया, वो कहाँ से ओरिजिनल आइडिया कहाँ से आया, what all problems did you face, वो कैसे, because it is not just a one day thing. एक दिन में कभी कुछ नहीं बनता है. So try to share the complete process, the complete story and the steps. So this will bring back the focus on you. जो ओरिजिनल आइडिया जनरेटर होता है, फोकस उसके पास वापस आ जाता है इसी से. दैट व्हेन वी शेयर द कंप्लीट प्रोसेस, when we share the complete process, that this is how I started with it. So start sharing छोटे छोटे snippets of it. छोटी छोटी चीजें शेयर करना स्टार्ट कर दो, छोटे छोटे उसकी बातें स्टार्ट कर दो शेयर करना. That this is how I came up with this idea, this was how I started it, these were the challenges that I encountered, this is how I resolved this problem, this was how I how I solved this challenge. So जब आप ये चीजें शेयर करना स्टार्ट करोगे, और ये डेटा आप ही के पास होगा, ये डेटा दूसरे बंदे के पास नहीं मिल सकता क्योंकि उसने तो ये प्रॉब्लम्स फेस ही नहीं करी, उसने तो सीधा फाइनल प्रोडक्ट बनाया. सो दिस इज गोइंग टू गिव बैक दी पोडियम जो है वो वापस आपके पास आ जाएगा. सो वो जो मार्केटिंग वाला इशू है कि उस मार्केटिंग उसने ज्यादा अच्छी कर ली और फोकस आपके ऊपर से हट गया, वो फोकस वापस आपके पास आ जाएगा. And if you really want to take the control of this situation, what you can do is analyze that person's product. उसके product को analyze करो and see how different it is from your own product. अपना product देखो और उसका product देखो and share the differences. We do not highlight कि उसका product कैसे खराब है, हम उसमें जाते ही नहीं है, negative marketing हम नहीं करते हैं. We focus on our positives.
सो हम अपने पॉजिटिव्स को हाईलाइट करना स्टार्ट कर देते हैं. वी स्टार्ट शेयरिंग दैट द आवर पॉजिटिव्स आर दीज. वी स्टार्ट शेयरिंग दैट these are the things that we are our product is going to give you. सो हमारे पॉजिटिव्स ही हैं, हमारे स्ट्रेंथ्स ही हैं. आपको अपने स्ट्रेंथ्स पता चल जाएंगे प्रोडक्ट के जब आप दूसरे के प्रोडक्ट को एनालाइज कर लोगे. आप उनके प्रोडक्ट को टेस्ट कर लोगे, देख लोगे कि क्या इनका प्रोडक्ट है और क्या है. सो वी नेवर डिमीन एनीबडी एल्सेस प्रोडक्ट. हम उसमें जाते ही नहीं है कभी भी. हम सिर्फ अपना शेयर करना स्टार्ट कर देते हैं. Right, and then what we can do is we can of course collate our फीडबैक. अपने लॉयल कस्टमर्स को हम दोबारा कनेक्ट कर सकते हैं. हम न्यू टारगेट मार्केट हम लोग ढूंढ सकते हैं. सो अ लॉट ऑफ टाइम्स व्हाट वी डू इज कि हम लोग ना अपनी टारगेट मार्केट जो है वो बढ़ा सकते हैं. वी गेट स्टक. हम लोग को लगता है कि यार यही मेरी टारगेट मार्केट है, ये इसकी टारगेट मार्केट है. सो अपनी टारगेट मार्केट बढ़ा लेते हैं हम. वी प्रोबेबली कैन लुक फॉर अ न्यू डेमोग्राफिक. हम ये देख लेते हैं कि कुछ और टारगेट मार्केट है. एंड ऑफ कोर्स एक बहुत बड़ा पॉइंट जो कि मैंने श्रेया से भी डिस्कस किया था कि ये देखो कि एक्चुअली में क्या हमें इफेक्ट कर रहा है उसका प्रोडक्ट कॉपी करना. बहुत बड़ी तो ये आई थिंक, और उसको भी मैं यही समझा रही थी कि यू शुड बी हैप्पी. सो सिमिलरली मैं आपको भी कहूंगी एक बार ये सोचिएगा कि प्रोबेबली यू शुड रियली बी हैप्पी कि जो ये कॉपी हुआ है कि क्या इससे हमें इतना फर्क पड़ा है. या वी हैव लाइक बिकम रोल मॉडल. We become yes, we take it ki ideas. I definitely take it ki yes, ki ek new idea somebody trying to take it because it's something different and it's innovative. But kabhi kabhi na it really feels ki why is it so wo thoda sa I sometimes it acknowledge hits you that. back but then it comes back. So I take it yes if people are copying me or I going about acknowledge. after things. It's a good thing that we're moving in the right direction. As long No, as I we're moving understand. ahead, that is one thing. Yes, definitely I acknowledge it and I understand it also. And I mean I really understand. कभी हम upset हो भी जाते हैं because ऐसा नहीं है, मेरे साथ भी होता है. Because when I see people they blatantly copy the content कि बिल्कुल ही अरे थोड़ा तो दिमाग लगा के change कर लेते हैं, वो कभी होता भी है, मेरे साथ भी होता है. And then I also at times feel upset and then I really sit back and think. वो थोड़ा वो कभी कभी हम वो react कर जाते हैं. So वो Right, किसी के साथ भी right. हो सकता है. So it's okay, but then again the situation is what it is. So this is something that this is how we deal with it, that we keep on moving. So हमें तो अपना काम करना ही करना है, हमें आगे बढ़ते ही जाना है. तो कुछ Right, right. we do like we keep on like moving ahead. Right. हाँ राइट. सो कविता जी सेइंग चलता चल राही. हाँ ये गाना सुन लिया करो. सो कविता जी सेइंग ये गाना सुन लिया करो, चलता चल राही वाला. ट्रू. सो हिमांशी सिंह नकल के Right. लिए भी अकल की जरूरत होती है. हाँ राइट हिमांशी. एंड दिस रिमाइंड्स मी दैट वंस आई वाज talking to my mentor, and this point came up that there was someone who was like really copying when I was doing my earlier startup. So that person was like really total पूरा copy होता जा रहा था. And we were talking to my mentor कि क्या करना चाहिए. So he said that ये सोचो कि जिस इंसान को अपने आइडिया में जिसको कॉपी करने की जरूरत पड़ रही है, तो वो उसको लाइफ में वो क्या कर लेगा ना आगे. सो ये सोच के आगे बढ़ो. Absolutely. सो सिंस देन आई यूज्ड टू लाइक मैं ये सोच के तसल्ली दे देती हूँ कि यार ये कब तक कॉपी कर लेगा ना, और जिसे आइडिया में ही कॉपी करने की जरूरत पड़ रही है, ये काम क्या कर लेगा. तो दिस इज द अप्रोच आई थिंक वी ऑल शुड फॉलो कि ये क्या ही कर लेंगे ना आगे, जिसको आइडिया तक कॉपी I know. करना पड़ रहा And it's the more they come and copy it, or more they come and try to imitate you, is you come up with more, all the more better ideas. Then Definitely. that's a pushing, driving Because we also push at. ourselves, so we push our limits. Because हमें ये लगता है ना कि यार अच्छा ये कॉपी हो गया, अब now I have to do better, now I have to do even more, now I have to do even something even better than this. That's why. Absolutely. Right. Okay. So yeah, so Shreya is saying that I'm thinking new ideas, so I can give more options to the copier. So yes.
Lovely, great. Okay, so guys, I think these were the questions that Mataji wanted to ask, and I really hope that all of you also got answers to the questions, and you guys really can use these answers in your business. And थोड़ी सी तो आपको शायद हम लोगों ने आज help करी होगी. And before I say bye bye, I'm gonna give Mataji time to say bye bye to all of you. Thank you, Astaji, for giving these beautiful insights. It's just that sometimes we need that little push from you, or we need that little affirmations that yes, we are moving on the right track. Because there are so many of us, we as women entrepreneurs are going through a lot in our lives, and we really don't know whom to look up to. And trust me, you are one person I personally know. Just say be I have interacted. It's always like Asta is the go-to solution. कहीं पे life में problem आता है, कुछ भी आता है, the first thing Anytime. that we comes to our mind is always Astha is there for us. So, Astha mein hamari Astha hai. That's what I always Al- say, kind of a Always thing. there, So, always there for all of you. so thank you so much for giving these valuable insights. Everything matters a lot. वो छोटी छोटी चीजें, it's just that we need that push to get back things again, working in the zone, because somewhere at the back we have lot many things going about. I So can thank you so much for, it's always a pleasure talking to you and taking tips from you. Thank you so much, Mataji, and thank you everybody for attending this session and staying with us for so long. And thank you everyone. Thank you for your beautiful and thank you for your kind comments. Bye bye, everyone. Bye.